Hello everyone. Good evening everyone. In last video, we were discussing about the partial differentiation and several properties of partial differentiation, higher order partial derivatives, and some questions we have done as well. Now in today's video, we will be discussing about homogeneous functions. What is homogeneous functions? Their properties and corresponding Euler's theorem and their questions. So just a second. यस होमोजीनियस फंक्शंस। देखिए होमोजीनियस फंक्शन हमने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये वही होमोजीनियस फंक्शन है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पे ये फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल में है। दिस फंक्शन इज इन मोर देन वन वेरिएबल, राइट? सो एनी algebraic expression, any algebraic polynomial is called होमोजीनियस फंक्शन। पहले मैं आपको एक रफ डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊंगा। एनी एक्सप्रेशन और एनी algebraic polynomial is called homogeneous function if the total degree of each and every term is same। ऐसे आपको याद रखना, the total degree of each and every term is same। the total degree of each and every term is same। If it is same, then it is homogeneous function, otherwise not। Now come to mathematical definition। An expression, just a minute, an expression a naught x raised to the power 1 n plus a1 x raised to the power n minus 1 into y plus a2 x raised to the power n minus 2 into y square plus dot 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 plus an minus 1 x y raised to the power n minus 1 plus an y raised to the power n, in which every term is of degree n, is called homogeneous function of degree n। देखिए आप देख सकते हैं, यहां देखिए मैं पॉइंट करता हूं, ये फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है? टोटल डिग्री n। ये सेकेंड टर्म की टोटल डिग्री कितनी है? n माइनस 1 ये वाली और प्लस 1 ये वाली, टोटल n। द टोटल डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज n minus 2 plus 2, that is n। The total degree of this term is 1 plus n minus 1, that is n। And the total degree of nth term is n। So I earlier told that if the total degree of each and every term is same, then that expression or that function is called homogeneous function, and that total degree is called the degree of that homogeneous function। Here n is the degree of homogeneous function। ठीक है, अब देखिए इसको हम दूसरे व्यू से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार टोटल डिग्री क्या है क्या नहीं है, तो हम इसको एक दूसरे फॉर्म में भी समझ सकते हैं जो हमारे काम आएगा। देखिए क्या करते हैं हम, यू जस्ट टेक द कॉमन ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑलवेज। जस्ट लिसन केयरफुली, you just take common of highest power of x। For this polynomial or for this expression, the highest power of x is x raised to the power n। So we are taking common x raised to the power n। अंदर क्या बचेगा? a naught plus a1 y upon x plus a2 y upon x whole square plus an y upon x raised to the power n। What is this? This is function of y upon x, isn't it? Yes, it's a function of y upon x, and this is x raised to the power n। So this expression can also be written as x raised to the power n function of y upon x। अगर आप y की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते तो ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन क्या बनता? ये एक्सप्रेशन बनता
y raised to the power n function of x upon y. So this is the second form of homogeneous function of degree n. मतलब सिंपल सी बात यह है, अगर यहाँ पे n की जगह 2 आ गया, so this will be homogeneous function of degree 2. अगर यहाँ पे n की जगह 1/2 आ गया, so homogeneous function of degree 1/2. अगर n की जगह -1/4 आ गया, homogeneous function of degree -1/4. Right? So the homogeneous function of degree n can be written as this form or this form. मैं अब आपको दूसरी फॉर्म यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. If you are taking common y, highest power of y, then y raised to the power n function of bracket x upon y. Right? तो अगर आप x कॉमन ले रहे हैं, हाईएस्ट पावर लेनी है कॉमन, इस बात का ध्यान रखें. Always take the highest power of x common or y common. Highest power of y common. Either x raised to the power n or y raised to the power n. If x raised to the power n, then multiply it with f of y upon x. If y raised to the power n, then multiply it with f of x upon y. ये मैंने दो वेरिएबल की बात की है. Similarly, we can define this homogeneous function of degree n for number of variables. For example, if a function of several variables defined as f of x1, x2, x3, xn, there are n variables here. It's a function of n variables, x1, x2, x3, xn. ठीक है. अब इसमें से आप कोई भी एक वेरिएबल कॉमन ले लेंगे. n वेरिएबल्स में से x रेज टू द पावर n कॉमन ले लिया और इसके मल्टीप्लाई में फंक्शन ऐसा बन गया. राइट? ये x रेज टू द पावर n यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है. ये x रेज टू द पावर r कर लीजिए इसको. अगर n कर रहे हैं तो नीचे भी n आएगा. इट्स ए मिसप्रिंट हियर, तो मैं करेक्ट कर देता हूँ. मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. ये ऐसे कर लीजिए इसको, और ये जो है ना, ये हटा दीजिए. राइट? Okay. So in general, for n variables, we can define in a similar manner, right? Now, what is Euler's theorem? This is very important. What is Euler's theorem? What is the statement of this theorem? If f of xy is a homogeneous function in xy of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. This is very important. We can prove it as well. We will prove actually. I repeat the statement of Euler's theorem. If there is a function of two variables, which is, for example, f of xy. If f of xy is a homogeneous function of two variables with degree n. If f of xy is a homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. So this is very important result which we are inboxing. Proof देखते हैं इसका. It is already given in the theorem that fxy is a homogeneous function of degree n. If fxy is a homogeneous function of degree n, then we can write this function as this. अभी define किया है हमने. We can write the homogeneous function of degree n by this, x raised to the power n function of y upon x. We can write it. Now just differentiate this expression or this function with respect to x partially. So we are differentiating partially with respect to x, del f upon del x. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे. So just do it. So we are differentiating with respect to x partially. We will assume y as a constant. करते हैं. X raised to the power n as it is.
differentiation of f of y upon x is f dash y upon x, multiplied with differentiation of y upon x, y is constant, and differentiation of 1 upon x is minus 1 upon x square, plus f of y upon x as it is, which is capital F here. Differentiation of x raised to the power n is n x raised to the power n minus 1. Similarly, we can differentiate the given function with respect to y partially. Del f upon del y is equal to, if you are differentiating with respect to y partially, then definitely x will be constant. So x raised to the power n is constant here. So x raised to the power n is constant here. Now differentiate f with respect to y, that is f dash, and by chain rule, differentiation of y upon x with respect to y, that is 1 upon x. Now multiply equation number 3 by x and equation number 4 by y. इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x del f upon del x बन गया, इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y del f upon del y बन गया, और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. So x del f upon del x plus y del f upon del y will be this. Simple addition. ये वाला टर्म देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, n x raised to the power n f of y upon x, that is n x raised to the power n f of y upon x क्या होगा, the given homogeneous function of degree n which is small f, so nf. Hence proof x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. So this is very important result, that if there is two variable function f of x y which is homogeneous of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. There is a second important result of Euler's theorem as well. It's again very important result of Euler's theorem for function of two variables, but this is for second order partial derivatives. हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं. If fxy is a homogeneous function of degree n in x and y, then x square del square f upon del x square plus 2xy del square f upon del x del y plus y square del square f upon del y square is equal to n into n minus 1 times of f. Again very important. These two results must be remembered. देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे. First result we have already proved for the homogeneous function of degree n. So by Euler's theorem we can write x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली. क्या मिलेगा, देखें, x एज इट इज del f upon del x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन del स्क्वायर f upon del x स्क्वायर प्लस del f upon del x as it is, del f upon del x as it is. Differentiation of x is 1 plus this plus y as it is. Differentiation of del f upon del y with respect to x, del square f upon del y del x plus del f upon del y as it is, and differentiation of y with respect to x is 0. That's why we didn't write. Is equal to n and constant, and differentiation of f with respect to x, del f upon del x. Similarly, with respect to y, we obtain equation number 3. Right? Now, multiply this equation second by x and this equation 3 by y. इक्वेशन 2 को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 3 को आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by x and 3 by y and adding, we obtain, आप ऐड कर दीजिए. लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई. 2 टाइम्स हो गया ये वाला. और राइट साइड में ऐड करेंगे तो
n minus 1 times of x del f upon del x plus y del f upon del y. Simple addition, simple calculation. And what is the value of this expression? X del f upon del x plus y del f upon del y is nf by the Euler's theorem. So this is basically nf. So the result will be n into n minus 1f. Hence proof. So these two statements or formulas are very, very important for Euler's theorem, for homogeneous functions of degree n, and the function is of two variables, right? This is it for this video, and in next video we will be discussing some questions, some verification of Euler's theorem, right? Thank you very much.